Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social studies class. My dear students, as you know that we are on unit number 1, citizenship, and today is its 8th lesson. So let's quickly look at today's student learning outcome. So today all the students will be able to define the term peace and conflict. ठीक है, आप इन दोनों words को या इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर पाएंगे कि पीस क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. एंड द स्किल्स दैट विल बी डेवलप्ड आर रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग. So my dear students, let's quickly move forward towards refresh your knowledge. So you have to answer a few questions. Quickly tell me, how do you keep peace at home and school level? आप घर में और स्कूल में जब आप कैसे जो है वो आप पीस जो है उसको मेंटेन रखते हैं. Yes, very good. ये हम प्रीवियस क्लासेस में वी हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स कि कैसे जो है वो झगड़ा ना हो, कैसे जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीस मेंटेन रहे. सो हाउ डू यू मेंटेन पीस एट होम एंड स्कूल लेवल? बाय रिस्पेक्टिंग others' opinion, we can maintain peace at home and school and everywhere in the society. Next is, what is meant by conflict? Ji, quickly tell me. Yes, conflict means when we have disagreement, when we fight, that is called a conflict. Do you have, this question is not written correctly. Do you have any conflict in past? आपका क्या कभी पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई झगड़ा हुआ है? Say yes or no. Yes, I have many. If I talk about myself, yes, I have many conflicts in the past. Okay, my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. Verily, the best of the people to Allah are those who begin the greeting of peace. So, my dear students, according to this हदीस, सबसे बेहतर शख्स वो है अल्लाह ताला के नज़दीक जो कि सलाम में पहल करता है. So my dear students, now is the activity time. For this activity time, you need some sticky notes like this. ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा. And you need a notice board or you need a chart paper for this. Then you have to write the meaning of peace for you. यानी कि आपको जो भी लगता है कि पीस का क्या मतलब है, आपको वो स्टिकी नोट पे लिखना है हर स्टूडेंट को, एंड देन दे हैव टू पेस्ट इट ऑन द बोर्ड और ऑन द चार्ट पेपर. सब अपना अपना ओपिनियन पीस के बारे में लिखेंगे यहाँ पे. व्हाट डू दे थिंक, व्हाट इज पीस टू देम, एंड देन राइट इट, और फिर उसको सब पेस्ट करेंगे. तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे कि सबको पीस क्या लगता है कि उनके लिए क्या है, कैसे पीस मेंटेन हो सकता है. So let's write it down. मैं अपना opinion ज़रा यहाँ पर लिखती हूँ and I'll paste it. For me, peace is to respect others' opinion. ठीक है, जब आप respect करेंगे दूसरे के opinion को तो खुद ब खुद conflict और disagreement नहीं होगा और peace maintain हो जाएगा. So I'll paste it on the notice board. So this is how every student will paste their opinions on the notice board. और आपका कुछ जो है chart paper या notice board इस तरह का colorful सा हो जाएगा. And by the end teacher जो है वो सबके meanings जो है उनको read out करेंगे. So you can pause the video and you can perform this activity. I hope everybody has done it. Now we will move forward. So what is peace? कामनेस. पीस जो है वो है सकून या रिमेन काम, पीसफुल, रिलैक्स्ड आप रहने का नाम है. ठीक है, और आपको साइड पर एक पिक्चर भी नज़र आ रही है इन विच यू कैन सी द साइंस ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट. एक तरफ आपको एक हैंड ग्रेनेड नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ आपको फाख्ता नज़र आ रही है जो कि अमन का पैगाम, डव, दैट इज़ द साइन ऑफ पीस. So my dear students, on page number 14, quickly open page number 14 and then we will start reading.
I hope everybody has opened page number 14. Now let's start reading. Peace. A period of harmony, friendship, and sympathy among the people, social groups, and countries is called peace. Peace is characterized by lack of violence, absence of conflicting behaviors, and freedom from fear of war. The consequences of peace are better and have positive effects on society. Okay, my dear students, so now you have seen that what are the different meanings of peace, like harmony, friendship, sympathy, or यानी कि you must be free from the fear of war, कि कभी कोई जो है वो जंग हो सकती है या कोई झगड़ा हो सकता है. So these are the meanings of peace. और peace जो है ये long term में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग सुकून से रह सकते हैं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है. So आप जब दूसरों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप दूसरों के साथ सिंपैथी करते हैं, आप दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, तो दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन पीस. Now comes what is conflict, that is disagreement. So now let's read about conflict. Conflict. The state of disagreement or clash among the people or ideas is called conflict. The consequences of conflict may be severe and lead to a waste of resources, energy, and time. So my dear students, what is conflict? Conflict is always disagreement. जब आपका कभी भी किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ हो जाए, that leads to conflict. और इसके क्या consequences होते हैं? क्यों जब आपका conflict हो जाता है तो उसके after effects क्या होते हैं? क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बड़े लेवल के ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो देन इट लीड्स टू अ वॉर, किसी बड़े झगड़े की तरफ या जंग की तरफ हो जाता है. एंड देन ऑन द बोथ साइड्स जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वी हैव वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मनी एंड एवरीथिंग. सो कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बैड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी. So the wrap up of the lesson is difference between peace and conflict, their meaning and how they connected. ठीक है? Peace जो है, that is always respect of opinion for others leads to peace, and then friendship leads to peace, sympathy leads to peace, और आप free हो जाते हैं from the fear of war. Whereas conflict is disagreement, you do not respect others' opinions, others' ideas, and that leads to wastage of money, time, and energy. So my dear students, your homework today is given on page number 15, that is home activity number 8. Communication can resolve any conflict. Do you agree? Discuss some forms of conflict and their solution with your parents and grandparents. So my dear students, जो conflict है उसको resolve करने का तरीका है talk. Talk about the disagreement that you have, talk about the problems that you have, and then find a solution, a peaceful solution for that. इस बारे में अगर आप agree करते हैं, then talk about this with your parents or your grandparents and tell them to sign the activity for you. And then comes your homework given on page number 21. There is a question, how peace and conflicts are interlinked. ठीक है? Peace और conflict interlinked कैसे हैं? What leads to peace? What leads to conflict? और कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, आप पीस में चेंज कर सकते हैं, तो आपको उसका लिंक जो है वो बताना है. एंड राइट इट डाउन ऑन पेज ऑन योर नोटबुक. देन कम्स द वर्कशीट. Using the vision of humanity, global peace index, search for answers to the following. For this you need internet and a computer, and then you have to search for these questions. ठीक है? This worksheet will be provided to you by your teacher. Which are the most and least peaceful countries in the country? आपको most peaceful countries के बारे में यहाँ लिखना है और least peaceful countries जो है उनके बारे में यहाँ लिखना है. जहाँ पर बहुत ज़्यादा war है उनका आप least peaceful में आ जाएंगे. जहाँ पर अमन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता उनके neighboring countries के साथ उनका, that will come in peaceful countries. Which parts of the world are most affected by conflict? आपको जोन से पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, आपको ये इसी तरीके से सर्च करना है क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर हेयर.
Which areas are the most peaceful? ठीक है, कौन सा एरिया है दुनिया का जो सबसे पीसफुल है, वो आपको यहाँ पर लिखना है. The Global Peace Index measures peace using 3 themes. What are they? ठीक है, Global Peace Index जो है वो 3 themes यूज करता है for peace, to measure peace. आपको वो तीनों जो है यहाँ पर सर्च आउट करके लिखनी है. Then is the world getting more or less peaceful over time? Answer this, whatever you think. What does the index tell us about refugees? ठीक है, who are refugees? आपको उनके बारे में ऐसे लिखना है जो किसी भी वॉर के बाद लोग जो है बच जाते हैं और उनको पनाह दी जाती है. They are called refugees. Have any countries gone down sharply in the index during the last year? If so, what do they all have in common? ठीक है, कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो पीस इंडेक्स में नीचे चले गए हैं और इसका रीजन बिहाइंड क्या है. Always conflicts bring you down and peace gets you up. So write down the answers according to this. It is all about searching, give it a thought and then solve this worksheet. So my dear student, announcement of the lesson for next class. In the next class we will define the term peace and conflict. ठीक है, next class में हम जो term peace और conflict है उसके बारे में बात करेंगे. इनको in detail थोड़ा सा पढ़ेंगे. Until then, stay tuned, keep everybody around you safe, respect everybody around you and have a good day. Allah Hafiz.